Environmental chemistry. The branch of chemistry that deals with the chemicals and toxic substances that pollute the environment and their adverse effect on human beings is called environmental chemistry. As you know, students, we all love neat, clean and pollution free environment. बट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम वो तमाम केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं और इस पोल्यूशन का लिविंग थिंग पर और उनकी लाइफ पर जो भी असर पड़ता है वो सब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एसिडिक रेन. Acidic rain is a worldwide environmental issue and it damages living things and non-living things. But what is the cause of acidic rain? The cause of acidic rain is industrial smoke like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. They pollute our environment and when they mix in our water, they produce acidic rain. These both gases are responsible for acidic rain. So we study the acidic rain and its effect in environmental chemistry. And the other issue of environment is global warming. We also study the global warming in environmental chemistry. ये ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह क्या है और वक्त के साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है, तो इसके तमाम फैक्ट्स को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. इसके अलावा ओजोन डिप्लेशन भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है. This is also one of the environmental issue. Water pollution. Water pollution is also one of the environmental issue. और water pollution किस तरह से होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और अगर इंसान इस polluted water को इनटेक कर ले तो इस polluted water से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं वो सब भी हम environmental chemistry में डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंट के अंदर वो तमाम टॉक्सिक एंड केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं और इंसानों के ऊपर और अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एनालिटिकल केमिस्ट्री. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.